Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today I will discuss from this portion because I have to complete the chapters within the short time. A less active metal like magnesium, zinc, or iron easily displaces hydrogen from dilute hydrochloric or sulfuric acid. So, student, you have to learn the name of the metals like magnesium, zinc, and iron. They are not highly reactive. They less reactive and easily displace hydrogen from dilute HCl or H2SO4. Look at the example. Zinc plus HCl, ZnCl2 plus hydrogen. हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है. सेम way iron plus H2SO4, FeSO4 plus hydrogen. The displacement of copper from copper sulfate by iron or zinc. When an iron knife or nail is placed in a copper sulfate solution, there is a brown red deposit of copper over the iron object. Look at here. When any iron object placed in the copper sulfate solution, this is the copper sulfate solution, there is a brown red deposit of copper over the iron object. We will observe here is the red brownish cover is deposit on the iron objects. After some time, the blue color of the solution changes to green. थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे नॉर्मली कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू है दैट टर्न इनटू ग्रीनिश कलर owing to the formation of iron sulfate. Look at the chemical reaction. Iron plus copper sulfate, they form iron sulfate plus copper को replace कर रहा है. तो नॉर्मली आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में ऐसे ही प्लेस करेंगे तो नॉर्मली देखेंगे क्या आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउनिश रेड कलर का एक तो डिपोजिट हो रहा है, सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इट विल बी टर्न इनटू ग्रीनिश कलर because iron sulfate is formed. So here as iron easily replace the copper, the formation of iron sulfate, because the color of iron sulfate is green. So student, you have to learn the color of the particular substances. Like copper sulfate, the color is blue. Same way iron sulfate, the color is green. Also zinc salt displaces copper from the copper sulfate, but the resultant solution is colorless. मगर ऐसे भी zinc कॉपर को इजीली रिप्लेस भी कर सकता है, मगर इस टाइम सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा बट इट टर्न इनटू कलरलेस. यू कैन यूज अ पीस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक इन अ प्लेस ऑफ आयरन एंड इट विल बी कोटेड बाय कॉपर. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ग्रैन्युलेटेड जिंक ले सकते हैं. व्हेन इट प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट, नॉर्मली देखेंगे क्या जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और the solution turn into colorless. Zinc plus copper sulfate, the color is blue. Always the copper sulfate is blue. Next copper को रिलीज कर रहा है ब्राउन रेड कलर का कॉपर और जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है जिसका कलर क्या होगा, कलरलेस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. The double displacement reaction, the positive and negative radicals of two reactants are exchanged, leading to the precipitation of the product. मतलब what is a double displacement reaction? Naturally, in case of displacement reaction, the reactant and a product just change their places. But in case of double displacement reaction, positive and negative radical of two reactants, मतलब two reactants जरूरी है. Here as the positive and negative radicals exchange their places to form precipitation of the product. So what is double displacement reactant? It is very important. In case of double displacement reaction में reactant दो reactant का the positive और negative जो radicals है, they exchanged their places to form the precipitation of the product. Double displacement reaction are very fast and the precipitate is a form as soon as the reactant come in contact. मतलब रिएक्टेंट जब एक दूसरे का कांटेक्ट में आएगा जल्दी प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है.
quite often the color of the precipitate is different from that of the reactant. Normally precipitate का जो color होता है that is the quite different from the color of reactants. The following are the some common examples. Here are some common examples. Look at here. The reaction between silver nitrate and the sodium chloride. When an aqueous solution of silver nitrate is mixed with that of the sodium chloride, a white precipitate of the silver chloride is formed. The sodium nitrate form remains in the solution. So here is the silver nitrate, the color is colorless. Again the sodium chloride, the colorless. Same way जब silver chloride form हो रहा है, that turn into white color, and sodium nitrate form हो रहा है जिसका भी color है colorless. So normally जब ये दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, फटाफट जल्दी ये सिल्वर क्लोराइड में ट्रांसफर हो जा रहा है और कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है जिसका कलर है क्या, व्हाइट. लुक एट द केमिकल एक्सचेंजेस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स जो है एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहा है. Reaction between the barium chloride and sodium sulfate. When a solution of a barium chloride is mixed with that of the sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is formed along with a solution of sodium chloride. The solution initially appears white but gradually become colorless as the precipitate settle down. तो नॉर्मली जब हम फास्ट एक दूसरे का कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा दैट इज बेरियम सल्फेट, कलर होगा व्हाइट, but after sometimes the color will be changed because the precipitate will be settled down at the bottom of the beaker. Look at the chemical reaction. Barium chloride plus sodium sulfate. The color कितना है, colorless है. दोनों ही जब precipitate form हो रहा है उसका कलर होगा बेरियम सल्फेट का white, but after some time the white color will be changed into colorless. For what? Because precipitate will be settled down on the beaker. Now neutralization reaction. The acid as well as the base lost their properties to form a salt and water, which are neither acidic or basic. They are neutral, so the reaction is called neutralization reaction. मतलब इसका मतलब क्या है? In a neutralization reaction, acid react with the base, forming a salt and water. So in which type of reaction acid react with base and form salt and water? This kind of reaction is also known as neutralization reaction. I mean the product form hoga, it may not acid or base. That's why it is known as neutralization reaction. Look at here. There are lots of examples. So you will learn only one. It is very easy. HCl plus NaOH, एक तो acid और एक तो base. Form क्या हो रहा है? Sodium chloride plus H2O. The product are not acidic or not basic. Now, oxides and their nature. It's very important. For example, सबको याद करना है. Oxides are an important class of compounds. We know that the two simple oxide, water and carbon dioxide, play important role in our life process, agriculture and industry. So let us discuss the preparation and the acid-base nature of the oxides in general. First, preparation. They can be prepared by the following process. By direct combination. An element generally forms its oxide when heated or burned in air or oxygen. The reaction is exothermic and hence continues on its own when initiated. मतलब जब हम कोई मेटल को ऐसे ही एक्सपोज एयर में बर्न करने लगेंगे, आई मीन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है. सो लुक एट हियर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर इग्नाइट करेंगे मतलब हीट देंगे तो नॉर्मली फॉर्म क्या करेगा, वाटर. सेम वे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्न करने लगेंगे तो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. सेम वे सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अगर बर्न करने लगेंगे तो फॉर्म क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड. सेम वे मेटल्स, these are the non-metals and metals. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर अगर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो दे फॉर्म पर्टिकुलर मेटल्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सेम हुए कैल्शियम अपना फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड. सो यू हैव टू जस्ट लर्न व्हेन वी generally burn or heated the non-metals and metals into the exposed air, I mean in the presence of oxygen, they form their particular
oxide. Next, by the thermal decomposition of some compounds, the oxides of both metals and non-metals are formed when the hydroxides, carbonates, sulfates and nitrates of metal are strongly heated. This portion is very important. By the thermal decomposition of some compounds. Decomposition मतलब breaks down. मतलब हीट देके अगर कोई कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो नॉर्मली दे फॉर्म देयर पर्टिकुलर ऑक्साइड. सो कौन सा टाइप का? नॉन मेटल्स है लाइक हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ मेटल. मेटल का ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर हम लोग हीट देंगे और द हीट देके इसको अगर तोड़ने लगेंगे, दे फॉर्म देयर पर्टिकुलर ऑक्साइड. लाइक Zn OH होल ट्वाइस मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड. सेम है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लू इज व्हाइट, तो फॉर्म क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक इन कलर. मतलब पर्टिकुलर मेटल का अगर हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट्स हो, सल्फेट्स हो या नाइट्रेट्स हो, अगर उसको हम लोग हीट देंगे, दे ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म देयर पर्टिकुलर मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. नेक्स्ट, कार्बोनेट्स. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो फॉर्म क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सेम है जिंक कार्बोनेट को अगर फॉर्म हीट देंगे, दे फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो फॉर्म हो रहा है जिंक ऑक्साइड पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड और रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट देते हैं, यार पर्टिकुलर फॉर्म हो रहा है पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर. सेम हो, अगर कार्बोनेट को हम लोग हीट देते हैं तो फॉर्म हो रहा है पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर रहा है मतलब रिलीज कर रहा है. नेक्स्ट, सल्फेट्स. ये एक्सेप्शन याद रखना, मतलब सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट अगर हीट देते हैं, दे डोंट फॉर्म देयर पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फेट्स सेम है, आयरन सल्फेट को अगर हीट देते हैं, दे फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. एंड द एक्सेप्शन इज सोडियम सल्फेट, potassium sulfate, calcium sulfate, etc. So student, you are be very careful about the exception because I will catch the question from this exception part. And here is some example of nitrates. Calcium nitrates को अगर हीट देंगे, they form the calcium oxide plus नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. तो एक्सेप्शन सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ऑन बीइंग हीटेड डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट. तो नॉर्मली सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग हीट देंगे तो दे डिकम्पोज एंड फॉर्म सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्राइट. नाइट्रेट से नाइट्राइट हो जाएगा. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन. Oxides have been classified into many ways. Here we will take up a classification based on their acid-base character. Like oxides are 4 types: neutral, acidic, basic and amphoteric. So student, you have just learned the example of the particular type. Neutral oxide, acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide. So oxides are 4 types: neutral, acidic, basic and amphoteric. Neutral oxide. Neutral oxide which are only 4 in number, neither acidic or not basic. So neutral oxide का मतलब क्या है? वो ऑक्साइड बेसिक भी नहीं होगा और एसिडिक भी नहीं होगा. एग्जाम्पल वाटर, कार्बन मोनोक्साइड, nitrous oxide and nitric oxide. These 4 are neutral oxide. They do not change the character of an acid or base. The neutral oxide cannot change their properties. They may not be acidic or basic. Next, acidic oxide. The oxide of non-metals is generally acidic. तो non-metal जो oxide form करता है, they form acidic oxide. Reaction with water, they dissolve in water to form acid. मतलब ये oxide को हम लोग अगर water में dissolve करेंगे, they easily form their acid, which neutralize base to form salt and water. Example, like carbon dioxide plus hydrogen, water. अगर carbon dioxide को हम लोग water में dissolve करेंगे, they form carbonic acid, H2CO3. A compound that is obtained by removing the element of water
from an acid is called anhydride. इसके नीचे दाग लगाना. What is anhydride? मतलब अगर हम कोई कॉम्पाउंड, मतलब वाटर में अगर एसिड फॉर्म कर रहा है, जो कॉम्पाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दे फॉर्म एसिड, उसको हम क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ द एसिड. इन अदर वर्ड्स, द एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड इज कंपाउंड व्हिच एड्स अप वाटर टू फॉर्म द एसिड. सो एनहाइड्राइड जो है, जो एसिड फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर वाटर डिसॉल्व है. दस दीज ऑक्साइड्स आर एसिड एनहाइड्राइड्स. इसका एग्जाम्पल से पढ़ना. कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे दे फॉर्म H2CO3. सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो फॉर्म कर रहा है H2SO3. सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो फॉर्म कर रहा है H2SO4. सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर दे फॉर्म एसिड. सो दीज substances are known as anhydride, and these products are also known as acid anhydrides. Next, reaction with bases. They directly react with bases to form salts. Like कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म सोडियम कार्बोनेट. तो रिएक्शन विथ बेसेस, दे डायरेक्टली रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स. तो नॉर्मली अगर हम लोग बेस के साथ एसिड को डायरेक्टली ऐड करवाएंगे तो दे फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट. दिस पोर्शन इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट, बेसिक ऑक्साइड. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक and react with acid to form salt and water. These two lines is very important. The metal oxides are generally basic. मतलब metal जो oxide form कर रहा है, these are the basic in nature, and when they react with acid they form salt and water. Example is here, magnesium oxide plus HCl फॉर्म क्या हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O. तो पर्टिकुलर मेटल का जो ऑक्साइड है, दीज आर द बेस. व्हेन इट्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म salt and water. Next, amphoteric oxide. An amphoteric oxide is one which behaves like a base in the presence of an acid and like acid in the presence of base. So this portion is very important. What is amphoteric oxide? Amphoteric oxide behave like a base in the presence of acid. Same way it behave like a acid in the presence of base. These are metal oxide like aluminum trioxide, zinc oxide, lead oxide. These are act like acid presence of base. Same way they behave like a base in the presence of acid. These are known as amphoteric oxide. Here is the example. You can learn this one. Base plus acid, zinc oxide plus H2SO4 फॉर्म हो रहा है क्या? Salt plus water. Same way base plus acid, तो सोडियम ऑक्साइड प्लस ZnO फॉर्म क्या हो रहा है? Salt, sodium zincate plus water. So student, you will be very careful about each type of example. So student, I hope all of you understood what I've discussed in the total chapter. This chapter is not easy, it's very tough chapter. So for today, up to this portion, in the next class I will discuss the exercise.